हैं व्रत। हर कोई आजकल व्रत तो रख रहा है, सोमवार का भी व्रत है, ये तो किसी भी व्रत में खा सकते हैं। मैं नवरात्रों में भी यही खाती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा उसके ऊपर दिखा रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पनीर और पालक जैसे ऐसे काट के पनीर के साथ करती हूँ, या लौकी की सब्ज़ी कर लो या कुछ भी सब्ज़ी कर लो। तो मैं तो पालक खाती हूँ, इसको थोड़ा सा बना दिया, एक टमाटर अदरक देके। और ये बना रही हूँ मैं खिचड़ी। यूजुअली हम साबूदाने का ना पोहा खाते हैं और उसमें आलू बहुत होता है, दोनों कार्ब्स होते हैं, ये भी और आलू भी। तो व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज मेकिंग अ खिचड़ी आउट ऑफ इट, विच आई एम गोइंग टू डू विद दिस। फर्स्ट आप भिगो नहीं भी दें, ऐसे भिगोते तो ठीक है, पर ना भी भिगोएं आप तो भी आप इसको बना सकते हैं तुरंत का तुरंत, है ना। तो आप जस्ट स्टार्ट विद, या आपने उसको उसमें थोड़े से पानी में डाल दिया एंड तुरंत आप इसको तुरंत का ही बना सकते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज दिस, लेट गैस फर्स्ट। और इसमें जो है 1 चम्मच आप घी डाल दीजिए, डिपेंड करता है कितना, क्योंकि हम तो बस बहुत ही थोड़ा बना रहे हैं 2 लोगों के लिए। तो इसमें कभी आप केवल अपने लिए भी बनाते हो तो 1 चम्मच या इस टीस्पून से 1 या 1.5 चम्मच, इट इज इनफ फॉर 2 people. So I'll just put this and crackle some, sing this, crackle some jeera. And here we go with jeera, little bit of jeera, let it crackle a bit. थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें अदरक दे देंगे, थोड़ा सा क्रैकिंग कर जाए, काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये एक्चुअली दिस इज वेरी हेल्दी। व्हाट आई डू इज आई जस्ट पुट ऑल द वेजीज दैट आई हैव। इन विंटर्स यू हैव लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, बट इन समर वी हैव दिस स्कैरसिटी फॉर वेजिटेबल्स। सो परवल, शिमला मिर्च you can do, and you can put taroi also, which I have put. In summers, in winters, of course, you have gobi, you have cabbage, fresh cabbage throughout the year is coming, but it's not very good quality. In summer, it is not good, and कीड़े भी होते हैं गोभी में, है ना, चाहे वो cabbage हो या cauliflower. So I prefer doing this parwal. I have just chopped it very finely, and my shimla mirch, and so I have done with the taroi. Now I just put this. I don't put potatoes in it. And it is like a tapioca soup. Actually, I call it a tapioca soup. साबूदाने की खिचड़ी, जिसको एक्चुअली जो खिचड़ी बोलते थे व्रत में. So this is the खिचड़ी that I am making. And salt again, people have this कौन सा salt डालो, क्या डालो. तो सेंधा नमक हम लोग डालते हैं. This is Himalayan salt which I'll be putting. Again, this is healthier option. So you can eat it, no problem. Now the jeera is crackled and we put adrak in it, bit of adrak. And here goes your hara mirch, green chili, and then you put all the you put tomatoes first, थोड़ा सा, है ना. You put tomato here. Put the chimney on, and then you put the salt. Bit of tomato goes into it. Tomatoes थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा उसका सूप अच्छा बनता है. So I am for this half a cup of sabudana, I am putting 3 tomatoes, medium size. And it makes it more soupy. A little bit of red chili also you can put. 2 green chilies I put, and this also. So it goes. Of stirring and tomatoes को थोड़ा सा पका सकते हैं, and then you put all your veggies. You can just show it here. So now all the veggies are going in. A bit, just cooking it a bit so that soupy tomatoes we have. If
you ask me that can the puree be made out of tomato, I'll say no, because you cut the tomato and then you just cook a bit with the ghee, then that texture comes out differently. And then this tori goes in. Just you can show it here. And then you put all these parval and whatever veggies you like, you can. Green veggies especially, you can just give it a stir. Just to saute a bit and then put on your sabudana in there. Putting the sabudana in there. Salt we have put in already in the tomatoes. And here usually we put poha like this, and putting lots of potato in it. It becomes very healthy if you ask, which becomes very heavy if you ask me, because of course it is very tasty, but it becomes heavy also. And this thing is not heavy at all. You can eat a bowl full of this maybe, but you don't feel bloated or it's not heavy. So I'll just put a bit of this water now. Water should be, if I have measure, whatever katori you measure it, if you are putting this much sabudana full of it, then 4 times then we put water. That is the only option. Like make it soupy like that if you put more water. 4 times, almost 3 times or 4 times I put the water in. So it goes like this because I made my katori is this. This is my katori of sabudana. So I am putting water. 1 of this, then I am putting water 5. 1, 2, 3, 4, and 5. So let's see inside the cooker. So water should be like this. Water should be like this. And somehow if you don't have any veggies also, you can also put paneer in it. Small cubes, paneer in it also you can put. You don't have a lot of vegetables. Potato also you can put if you want, and you don't have anything else. Potato also you can put, and you put a lot of coriander leaves and green chili. That also is tasty because ultimately sabudana and potatoes can go together. So now I'm just putting it on, and after 1 whistle, 2 minutes.